हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज़ दिपेन फ्रॉम पुणे. सो आपको टाइटल पे से पता चल ही गया रहेगा. नाउ मैनी ऑफ अस गो टू राइड्स एंड देन योर राइडिंग हेलमेट इज़ डिफरेंट एंड सिटी हेलमेट इज़ डिफरेंट एंड योर राइडिंग हेलमेट रिमेन्स एज इट इज़. एंड अगर बारिश में अगर चलाई है आपने एंड इट हैज़ गॉट वेट वगैरह, ये सब सेक्शंस वेट हो जाते हैं या फिर ये बॉटम सेक्शंस वेट हो जाते हैं. तो और हेलमेट अगर ऐसे ही रह जाता है, इफ़ यू डोंट ड्राई इट इन द सन, देन वो बैक्टीरिया वगैरह पिक करके वो मॉस वगैरह जमा हो जाता है. आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं, इसके बाद एक क्लिप डाल दूंगा जिसमें हाउ बैड इज़ द हेलमेट. आई लेफ्ट इट एज इट इज़ फॉर अराउंड 15 days. तो उसके बाद ये कैसे हेलमेट गंदा हो गया था, तो वो दिखाना नहीं है मुझे कितना गंदा होता है, बट विल नाउ स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू क्लीन इट. ओके, सो व्हाट आई हैव डन इट, आई हैव प्रिपेयर सोल्यूशन. इसमें मैंने सोल्यूशन प्रिपेयर किया, इसमें मैंने सैवलॉन डाला है. ओके, अभी कलर पूरा चेंज हो गया है बिकॉज जब डाला था तब फ्रेश ऑरेंज था. बिकॉज इसमें मैंने ये भी ऐड किया है, सोडियम हाइपोक्लोराइड. नाउ दिस इज़ अ वेरी 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 गुड एंटी बैक्टीरियल स्टफ़. ये अपन ने अभी कोरोना के टाइम पे बहुत यूज़ किया है, तो ये मेरा वही कैन है, घर पे लेके रखा था. प्लस सैवलॉन डाला है. यू कैन यूज़ डेटॉल और यू कैन यूज़ एनी एंटीसेप्टिक और सिमिलर स्टफ़ विच हैज़ गुड फ्रेगरेंस, बिकॉज ये इसका हाइपोक्लोराइड का स्मेल इज़ अ बिट पंजेंट. कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है. क्लोरीन की जैसा स्मेल है इसमें. सो दैट आई हैव स्प्रेड टू ऑल द पार्ट्स राइट नाउ, सो दैट द बैक्टीरिया स्टार्ट गेटिंग किल्ड, मतलब वो एक्शन शुरू हो जाए. उसके बाद इसको निकाल के, ओके, निकालने में ज़्यादा कुछ है नहीं. ऑलमोस्ट सभी हेलमेट्स के पैडिंग्स निकल आते हैं. सो यू जस्ट टेक इट आउट एंड विल वॉश इट प्रॉपर्ली. यू कैन सी द स्टिल अमाउंट ऑफ डर्ट ऑन इट. आपको ये वीडियो इसके बाद दिख ही जाएगा कि कितना गंदा था. तो ये निकाल के अभी मैं इसको पूरा क्लीन करूँगा, उसका पूरा प्रोसीजर आपको बताता हूँ. So why is it so hard to let you go? Let you go. So why is it so hard to let you go? हेडलाइनर एंड दोनों चीक पैड्स मैंने निकाल दिए हैं. अब इसको निकाल नहीं पाऊँगा बिकॉज इट इज़ स्टिच डायरेक्टली इनसाइड. ओके, ये दोनों भी साइड के जो बेल्ट के कवर्स हैं, तो इसको मैं ऊपर से ही क्लीन करूँगा. एंड देन वैक्यूम से आई सक इट. आई गॉट अ वैक्यूम ऑल्सो, स्मॉल वन. उसे गंदगी सक कर लेंगे. या फिर आप इसको अच्छे से वॉश करके यू कैन देन लेट द हेलमेट ड्राई आउट इन द सन फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days, सो दैट देयर इज़ नो वाटर कंटामिनेंट्स या फिर वाटर कुछ अंदर रह ना जाए. धूप इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है, तो दैट यू कैन डू. ये दोनों साइड से गंदा है. पहले ये सबसे पहले ये वाला मैं क्लीन करूँगा. आई विल नाउ डिप इट इन 24 hours. मैं पानी में डिप करके रख दूँगा इन सोप वाटर. लाइक एग्जांपल, आपका घर पे सर्फ रहेगा या कुछ भी रहेगा, उसमें आप डिप करके रख सकते हो. One more tip, if you have sprayed this chlorine and all this and kept it for more than 24 hours, then I would advise you that you rinse it completely and then again dip it in a solution of soap water and maybe Dettol again. वो जो आपका सर्फ वगैरह रहता है उसमें आप डाल दो. एंड यू कैन यूज़ ल्यूकम वाटर, मतलब गर्म पानी यूज़ कर सकते हो, या फिर ल्यूकम या फिर थोड़ा कोमट पानी जो बोलते हैं अपन, वो यूज़ कर सकते हो. गर्म क्यों यूज़ करना है, ताकि जब आप रिंस वगैरह सब कर लोगे, जब आप हॉट वाटर यूज़ करते हो तो इसके जो अंदर के पोर्स रहते हैं, जो ये अंदर मटेरियल पोरस रहता है, तो जो पोर्स रहते हैं वो सब खुल जाएगा एंड दिस विल अगेन एक्सपैंड. अदरवाइज़ क्या है, नहीं तो ये आपका ये फ्लैट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस पानी रहने की वजह से अंदर वो चिपक के एकदम इट विल स्टिक टू ईच अदर एंड इट विल बिकम फ्लैट काइंड ऑफ. इसका विड्थ वगैरह रेड्यूस हो जाएगा. आइडली अगर ये बहुत पुराने हो चुके हैं तो यू शुड चेंज दिस एवरी 2 years और समथिंग. अगर आप हेलमेट काफ़ी साल यूज़ करते हैं तो मे बी यू कैन चेंज इट एट एवरी 2 years. इट शुड हार्डली कॉस्ट यू 1000 rupees और समथिंग. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिप इट इन हॉट वाटर एंड सोप सोल्यूशन. वाटर है तो मे बी इट विल रिमेन हॉट फॉर मे बी an hour और सो. उसके बाद निकाल के उसको फिर से मैं आई विल पुट इट इन सोप वाटर फॉर अनदर 24 hours. इज़ द अमाउंट ऑफ डर्ट एट फर्स्ट रिंस, मतलब इतना काला पानी अंदर है. इमेजिन इफ़ यू आर वेयरिंग दिस ऑल द टाइम ऑन योर हेड अगेन, मतलब आपने इसको धोए नहीं है बारिश के बाद, ऐसे ही यूज़ कर रहे हो आप रेगुलरली. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ डर्ट दैट इज़ अराउंड योर फेस विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड.
एक्सटर्नल स्प्रेज मिलते हैं जिसकी वजह से आपके फैब्रिक में अंदर इसके फैब्रिक्स में आपको सेंट वगैरह आ जाता है, आपको लगता है क्लीन हो जाता है, बट अनटिल एंड अनलेस यू रिंस इट लाइक दिस अंदर से गंदगी नहीं जाने वाली. नाउ दिस इज द सेकेंड रिंस एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ डर्ट इन इट. स्टिल द वाटर इज डर्टी. तो इसको मैं 3-4 बार रिंस करूँगा, उसके बाद आई विल पुट इट इन अ soap solution. So this is the color after 16 hours. Okay, it's not even 24 hours complete, and this is the amount of dirt. Again, after rinsing for 4 to 5 times, imagine what you're wearing. So I'm going to throw off this soap water and rinse the paddings again for 5-6 times and then continue. Now I've rinsed the paddings multiple times. उनको rinse कर दिया है. Finally, now I'm putting it in the machine at the lowermost setting and just for 5 minutes. And this 5 minutes is really slow. Okay, it is not very hard. So that all the dirt, gets, if at all any dirt is there, it gets pushed out. And make sure you add lot of water to this, so that the paddings do not brush against the bottom motor parts and all. Secondly, I've added bit of Savlon and Comfort to it so that it gets a good fragrance now. If you feel that this machine wash is going to damage your paddings or cushions, you can avoid it. I have so far been using it every time, every 6 months, and it works just fine. So at least my empty paddings have not had any issues so far. And like I said, you have to make sure that there's a lot of water in it so that these don't brush against the wall and get damaged. If you can see the cycle, it is quite soft. It is not that harsh. Next, I put them in the spinner where the water can be pushed out a little faster, and then I'll sun dry these. कम आउट फ्रॉम द मशीन, और अभी सन ड्राई के लिए रख रहा हूँ. इसको एक 24 घंटे से बाहर रखूँगा सो दैट जो भी पानी है वो इवेपोरेट हो जाए, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेंगे. सो द कुशन्स पैडिंग्स आर कम्प्लीटली रेडी नाउ. ओके, ड्राई एंड दे हैव गुड फ्रेग्रेंस बिकॉज आई एडेड comfort as well as Dettol and all. And don't go by this cut marks, slot marks and all, because I have done this to pass the intercom cables and all. But this is now in good shape. I mean, quality wise, I mean safety wise, or infection wise, they are disinfected and all. So I'm quickly going to install them on the helmet. There's nothing much. Backside there are 2 buttons over here, and of the top cushion, and front you have to put them back in some slots up there. And this is going to be left and right padding. Again, if your left and right paddings are way too old and all, if your cushions are way too old, I would advise change them. They hardly cost $1,000. I did also wash my Nico helmet cushions, so I'll assemble those also right now. By the way, I did clean my helmet also with soap water and running tap water and all. I sprayed a lot of water through it inside everywhere, especially these cushions over here on the belts or the straps. Okay, I washed these also and removed all the dirt from inside. Lot of dirt came out. In fact, you can still see that to some extent they are still dirty inside. Okay, but a lot of mud came out when I washed it. Then I kept it for sun drying for at least 3-4 days. Every afternoon I would keep it for an hour or so in the sun, and now it is ready for assembly. All cushions are back in place along with my Sena 30K. By the way, if you guys want to check how to install 30K on any helmet, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है. यू कैन ब्राउज इट एंड चेक इट आउट. अब सिर्फ बिठाना है वाइज़र, which I will clean in some time and then install it. I'm not sure if you can visually make out around, but I just gave it one hand of Formula 1 Carnauba polish. Okay, एक हाथ मार दिया इस पे, तो it is now shining from all sides, and it will be dust and
water repellent for some days. Anyways, it is not raining in now, so but still, now I just have to install the visor and then we are done. And the helmet is ready. By the way, this yellow tint that I've purchased, I'll advise you guys not to use this during the day, because when it is bright sunlight, it what I would say, it multiplies the sunlight, or it multiplies the brightness way too much, and it would be difficult for you to ride during the day, especially if you have eye problems and all. But if you ride during the night, then this is a very good one. But anyways, I made a mistake already and I'm using it during the day also. I rarely use this helmet now. I use it very less unless I'm traveling long distance and all. With that said, I'll end the vlog here. I hope you like the content. If yes, like, share, subscribe, and ask questions if you have any in the comments. I'll be happy to answer them. I know this work what I did is controversial, so those who don't want to do it, you can skip it. I know there would be people who said I've done completely wrong, but this is the only way out for people who who cannot afford to buy helmets very regularly, or their helmet gets dirty very easily in 2-3 months, and then it is not possible for everyone to change helmets every 2-3 months or cushions every 2-3 months. So this video is likely for those guys. Thanks once again, and see you in a new video. I'm so cold, yeah, my heart's sinking like a